Okay. So basically, I uh, I was discussing it with Manur, and uh, we thought that we should cover up the IMM SAQs questions, and I was thinking कि मैंने कभी थ्योरी पेपर की इस तरह से तैयारी नहीं कराई कि सवालों के जवाब मैं लिख सकूं. So I tried to gather the questions and tried to make a presentation, but I was not very successful. Then Manur gave me past IMM papers, और उसमें से मैंने अभी फ़िलहाल तक तो मैंने 65 के करीब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो यहाँ पे मैं शुरू करने लगा हूँ. And I will try to cover up at least 100 questions of IMM, but I definitely would like all of you to send me the questions. And if you have any question which you feel you have difficulty in attempting it from the examination point of view, send me the questions on the academic group or the Skype group. I will try to respond to the question and then cover up that question. So today's presentation is all about SAQs, short answer questions, which are actually part of the IMM paper. And I will try to attempt all the questions, as many as possible, so that you can listen to it. You can again rewind it. You can go to the YouTube. If you miss any question, you feel that this question is not appropriate for you to attempt, you can listen to the presentation again and attempt the question as I am mentioning it to you. So let's start for today. Manu, shall we start or should we wait? Sir, we should start now. Okay. Anybody, any question or not clear about anything, you can stop me and ask me the question again. So let's start with the presentation today. These are the IMM examination theory questions. And I have gathered as many SAQs as possible and tried to respond to them. But still, if you feel that you want to ask me any question, you can send the question. I will put it in my presentation, the answer to that question, so that it will be covered. And by the time you will be appearing in your IMM theory, lots of it will be covered. So if you'll be able to cover about 50 to 60% of the questions in the past papers, it will be good for you. And the rest you can prepare yourself as well. Of course, I cannot make preparation for 100% of the questions, because every time when there is an examination, the questions are usually 70% of the questions are absolutely from day-to-day knowledge. 10 to 15% of the questions are the difficult ones, which you have difficulty in attempting. And 15 to 20% of the questions are very difficult, which unfortunately, despite best possible effort, maybe you will miss them. So it's not necessary, but IMM hopefully will be done. So let's start from today. शोर बरपा है खाना है दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी. अभी सिर्फ जो कमी है वो IMM एग्जामिनेशन के पास करने की है. उसके बाद जो कमी होगी वो FCPS पास करने की होगी, और जब वो भी हो जाएगा फिर पूछेंगे आपको किस चीज़ की कमी है. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज. ओके. So the common question is in IMM theory paper is, what is biopsychosocial model of healthcare? When you are attempting this question, always remember these SCQs are 10 in number in one paper. And if it's a 2 hour paper, then for in 2 hours time you have to attempt 10 questions, which means 12 minutes per question, which means minimum time to write an answer will be 10 minutes. अगर 2 घंटे का paper. If it's a paper of 3 hours, then of course you have to divide the 10 questions and it will be about 18 to 19 minutes per question, which means you have to write for at least 15 minutes. And in 15 minutes, you can write about 4 sheets. And in 10 minutes, you can write at least 2 sheets. Less than 2 sheets means your question is not appropriately attempted.
When you are responding to the question, what is the biopsychosocial model of healthcare? You don't have to write about the, again, main or any other thing, but the theme. Biopsychosocial model of healthcare means biological component is addressed appropriately, which includes immune or stress response, the comorbidities occurring in a human or a patient, metabolic disorders associated with the presentation or medication, physical health is absolutely normalized, neurochemistry is corrected, genetic vulnerability is addressed, the drug effects, diet, and the lifestyle changes are modified, and response to reward and emotions is addressed as well. When we are talking about psychological health, which means that you have addressed the self esteem of a person, his attitudes and the belief systems, which are unfortunately affecting his physical or mental health. The coping strategies, you have to describe them, that these healthy coping strategies should be addressed or should be encouraged to practice. His perceptions about the life, people around him, and his interaction with the people should be corrected. His temperamental issues are addressed. His social skills are improved to an extent that he should be following the best possible psychological grounds to practice in his life the best possible social skills. His interpersonal relationships are good, and he is not having any effect of trauma or grief in the life. The social and environmental component addresses socioeconomic status, the family circumstances, the culture based problems associated around the patient, his school work, his work environment, and his work performance secondary to the environment, affected by the environment, should be corrected, and his peer group should not be able to bully him or make him degraded, and he should be able to live with them comfortably and enjoy the relationships in the peership. So, a biopsychosocial model of healthcare includes the biological processes, psychological processes, social and environmental processes, and some of the things that I have mentioned to you in this question. If you start writing about this question, it will be covering at least 10 minutes of your writing. Response to reward and emotions, drugs and dietary and lifestyle habits, interpersonal relationships, trauma and grief issues, etc., etc., that I have mentioned. I hope I am clear about it. Next question, which is asked commonly in exam, is classify memory. When you are classifying the memory, there are two types of classification. One which we used in day-to-day clinical practice, which includes the sensory memory and the short-term memory, and the long-term memory. Usually the sensory memory, the registration, the recall, the short-term memory, and the long-term memory are all connected to each other. This is the type of the memory that we practice in day-to-day, again, examination of a patient. So when a patient comes to you, you ask him about the cognitive processes, you give them few items, they have to recall them in 3 and 5 minutes time. You will assess the sensory memory and short-term memory, and then you will ask questions related to the long-term memory. The second classification of the memory includes multiple other themes, which includes one, episodic memory, sensory memory, short-term memory, explicit memory, implicit memory, long-term memory, and semantic memory. Now, all of these components, if you start explaining them, episodic memory means there are few things which are registered in your mind, which stays for a short period of time, and then they disintegrate or probably go into the to the boundaries of long-term memory, where you may not be able to recall them at any time in your life afterwards.
Sensory memory. So whatever you are seeing, whatever you are hearing, whatever you are feeling, these are all sensory memories. So the first touch of a boy with a girl, the first touch of a boy of a girl with a boy, the first time you have actually sensed a good perfume on a person you like, these are sensory memories and they are registered in your memory and then they stay there for a long period of time. So you can always recall them whenever you want to. Short term memory, usually most of the things comes in the short term memory, but after some time, if you rehearse them, then these short term memory processes go into the long term processes which stays there for lifelong. So at the age of 3, you start registering everything happening around you. Till the time you die, you have a good memory. Usually, this is short term memory is for about 5 to 7 minutes. After 7 minutes' time, if you don't rehearse it in your mind or otherwise, it disintegrates. But if you rehearsed it or if you try to recall it and you make it a part of a long term memory, it stays there for life. Explicit memory, memory which is very evident, like day to day work things. Implicit memory, those things which are usually not again seen as such, but they are part of the memory. Like concept about the lion. So if you see a lion, you'll be fearful. But none of us probably would have an encounter where we can come across with the lion face to face. So there are some memory components which deals with these kind of things, which actually never happens in your life, but they are there in your mind, at the back of the mind. Long-term memory, which is again a long-term, and semantic memory, when we make the concept about the things around us. So we try to acknowledge whatever is happening around us, eating, sleeping, again, day to day working, how to operate the mobile phone, how to operate the computers. Usually, we are not actually learning these processes directly or indirectly, but sometimes we know. We know that all the vehicles are driven by the, steering wheel and a gearbox in the car, but usually we don't actually acknowledge these facts. These are part of our long-term memory system. So you have to write that if somebody asks you classify memory, there are again two types of classification. One, working memory, and two, otherwise the other components of the memory. So you can classify memory as sensory, short-term, explicit, implicit, long-term, semantic, and episodic. And again, working memory, sensory memory, short-term memory, long-term memory. I hope it is clear to everyone. Let's go to the Sir, third. I have a question. I have a Short. question. Hmm? Sir, yes, it is clear. I wanted to ask कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं सिर्फ अटेम्प्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम इन चीज़ों को इन्यूमरेट करेंगे इन पॉइंट फॉर्म और उसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे मतलब सिर्फ मैं अटेम्प्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ इज दिस व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस दिस Yes. इज like this is how we should attempt the paper. Yes. So when you are attempting a paper, ठीक है, मैं अब आपको सॉरी इधर से मैं आपको पेपर के अटेम्प्ट के बारे में बता दूं कि जब आपका पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन, सो क्वेश्चन आया है कि you are seeing a young boy who is 17-year old and he came with the evidence that there is some memory disturbances. You want to assess the memory, just classify the memory and then briefly describe everything. Or there will be a question, जो इसमें question था वो तो बिल्कुल सीधा सवाल पूछा गया था कि how do you classify memory. ठीक है, अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है तब भी यही है, आप लिखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी, टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, 1 2 3, और उनके आगे एक एक लाइन डिस्क्राइब करने के लिए. Same goes for the other classification includes memory is classified according to the basis of sensory, short term, explicit, implicit, long term, semantic and episodic. और एक एक आगे
एग्जाम्पल उसकी कि जी इसका मतलब ये। सो अगर आप ये सारा शीट फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में, तो आपकी 3 और 7 10 14 लाइनें बनेंगी। जो सीपीएसपी शीट देता है आपको क्वेश्चन पेपर की, उसकी एक शीट में 8 लाइनें होती हैं। 14 का मतलब ये कि 2 शीट्स। So which is fine. This is again a question which should be attempted like this. Clear? Yes, sir. बिल्कुल. Thank you. Okay. अगला सवाल करते हैं. Okay. Next question is very common question. हर पेपर में ये एक सवाल जरूर होता है, defense mechanisms. Question usually is asked, what are the defense mechanisms? Can you describe displacement, repression, regression, sublimation, or denial? Whatever. Usually there are 3 to 5 defense mechanisms which are asked in the questions. 5 more common ones. Not again something which is not uncommon. So usually a common defense mechanisms are asked. Very rarely, if the examiner is not in a bad mood, he will ask you some of the defense mechanisms which are usually rare, but most of the time the common defense mechanisms are asked very explicitly. Definition. What is defense mechanism? A mental maneuver that one consciously or unconsciously chooses to use to distort or falsify the truth of one's experience in order to protect oneself from feeling painful emotions like shame, guilt, or anxiety. In simple words, a defense mechanism are basically the processes that we adopt to overcome our anxieties in day-to-day life. This definition is a book definition, but in simple words, I have given you the definition. A mental maneuver that one consciously or unconsciously chooses to use to distort or falsify the truth of one's experience in order to protect oneself from feeling painful emotions like shame, guilt, or anxiety. Now, what are the common defense mechanisms? Displacement. So my teacher cursed me or my boss cursed me, and when I went back home, I cursed my children. Displacement. We want to reduce our anxiety of boss cursing us, and we displace it onto our children. Repression. So we don't want to think that things are very complicated, so we repress our emotions and become a child where we want to be happy and comfortable, and usually we don't do that. Okay. Then regression. You regressed into the behaviors which are unacceptable just to overcome your own anxieties. Sublimation. Sublimation, the process in which the solid is actually directly goes up to vapor form without changing into the liquid form. So you try to sublime your emotional expressions by, say, you are angry at your wife, so you start punching a sandbag because you cannot hit your wife. So this is sublimation. Okay. Next question. What are define mature defense mechanism? Now this is a complicated question as far as the IMM question paper is concerned, but this was there, so I attempted it. Mature defenses are commonly found among emotionally healthy adults. When you say mature defense mechanisms, which means which are positively having an impact in your life or other people's life in your around you. Altruism, anticipation, asceticism, humor, sublimation, suppression. These defenses enhance pleasure and sense of control. These are called mature defense mechanisms. Freud, when we review it, development processes, instincts, and maturation. So mature defense mechanisms are adopted by mature adults. They are acceptable defense mechanisms to people around you or to yourself as well, and they have healthy
impact in your lifestyle. So if I'm deficient about something, I want to help people in poverty, or I want to help people who are preparing for IMM examination because nobody helped me, so I felt guilty about it. And now I am adopting a mature defense mechanism by helping people to prepare for the IMM examination, altruism. Same, and it's basically a more super ego related defense mechanism. Same goes for anticipation and aestheticism and humor. So when you feel that you are ridiculed for something, you just laugh, smile, crack a joke, try to divert your attention, and just take it lightly and let go of the bad feelings developing inside you. That is humor. Sublimation, I described it earlier as well, and suppression. So the mature defense mechanisms are helpful in catharsis, anti-cathexis. They are good defense mechanisms. They usually allow us not to fixate, regress, or repress. And they are basically an inborn instincts as well, which allow us to overcome things very appropriately, and topographically and structurally they are good defenses, right? So Sir, if you I are, have a question. yes, go ahead. सर जो mature defenses होते हैं they are a part of super ego if we consider the structural theory of mind. तो उसमें जो mature defenses हैं वो super ego का part होते हैं और जो दूसरे हैं defense mechanisms वो ego का part होते हैं. Am I right? नाउ, अच्छा वो आगे आएगा एक सवाल, उसमें मैं मजीद Oh. एक्सप्लेन कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट, बट रिमेंबर, यस, the mature defense mechanisms are part of the superego and sometimes ego as well. So it's very thin line, because Freud ने जैसे उसको explain किया, वो tip of the iceberg and the ego downstairs and on the side, and then there was superego coming up as well. So it's not a straight line that you can draw according to the Freud, clear distinctly this is the part of the superego. Very few of them, very few. Majority of them, they actually border between ego and superego. Yes, mature defense mechanisms. And the rest of the defense mechanisms are part of the ego and id sometimes as well. Because again, the boundary is very thin. When they are part of the id, slightly part of the id, then of course they are very problematic, and sometimes they can be troubling as well. But usually, again, as the name suggests, defense mechanisms are the mechanisms to overcome the stress and anxiety. So if you are repressing your emotions, then you are behaving like a child. And if you are regressed like a child, you start crying like a child, it won't be part of the superego. It will be more part of the ego and the id as well. Again, it's very complex and complicated situation. So don't go into the depth of it. But yes, most of the mature defense mechanisms are part of the superego and some part of the ego as well. And they are able to address the anxiety issues in our day-to-day life very nicely, acceptably. And people feel that, oh, this man is doing something wonderful. But as a human, if somebody start assessing me, then they'll be able to address it. Okay, fine. You are doing this because you had these problems, and when these problems were not overcome by it, you were feeling anxious, so you tried to overcome it with a defense mechanism which is altruistic in nature. So that is complicated. समझ आ गई? Yes sir, बिल्कुल आ गई. ओके, Thank you. ओके. मैं मजीद डिफेंस मैकेनिज्म पे सवाल बहुत आए, so इसलिए आई कम बैक टू दिस अगेन. डोंट वरी. ओके, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is active listening and role application?
This was a strange question, honestly speaking. कि वो communication skills का उन्होंने एक portion active listening के ऊपर सवाल बनाया. Active listening, there are 6 components. 1, you have to pay attention. 2, you won't judge the person. 3, you will try to reflect back time to time. So if somebody is saying, my name is Nasser, I live in Pakistan, I am a very boring person, then after some time, you will reflect back. Okay, what you have said to me is that your name is Nasser, you are living in Pakistan, and you are a boring kind of a person. This is reflection. So you pay attention, you withhold judgment, you reflect back, then you clarify. You said that you are a very boring person. What do you mean by that? Can you elaborate it? This is clarifying. Then summarizing. By the end of it, you will say, okay, fine. So far, whatever you have talked to me, you have said this, and this is what is the nutshell about you, and this is how you are presenting today. This is summarizing. And then you share, okay, fine, whatever you have said to me, let's talk about it in a different angle. This is the kind of the things which are happening to you. This is what we want it to be done. So let's work on this, and see how we are. So 6 components of active listening. So remember this: pay attention, withhold judgment, reflect back, clarify the things, summarize, and share, not with anybody else, but with the person you are doing the active listening. You won't share it with the other person as a breach of confidentiality, but it is with the person जिसको आप सुन रहे हैं, उसके साथ you will share. And when you say the role application, active listening and role application as the word suggests, role application. So whatever is my role, I have to fulfill that role. That is active listening role application. So if my role is as a therapist, then I have to play that role. That is actually role application. If my role is a leader in a group, I will be acting as a role application as the leader of the group. If my role is as a teacher, then my active listening role application is a teacher, right? So whatever is role assigned to you, you will apply your skills of role application to active listening and then assess the person or intervene in the situation. So leadership role application, my first choice is this, my second choice is this. You never say that this is what the best for all of you, do it. जैसे हमको आमतौर पे आदत होती है. We should always give people options and then ask them to opt one or two things. What habits will I use to complete this job each day? Why do I want this job? And my least favorite job is this. This is something role application, how you proceed with the things. So if I'm a teacher, then I will think about it. Okay, today I'm going to do active listening with my students. I will definitely describe the role and then I will try to assess them. So I will have to assess them on the parameters of their academic performance, their failures, their weaknesses, their judgments, and their things how they should be improving themselves. This is role application. Clear? नहीं समझ आया तो पूछ लो. रोक दो. कोई हाथ भी ना मिलाएगा. हाँ, go ahead. नहीं, मेरा मतलब था समझ आ गया है, आगे चले. थैंक यू. ओके. कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से. ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो. अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा. तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, इसे भूलने की दुआ करो. Okay, let's move forward. Again, this question was asked multiple times in IMM. What is MMPI? Minnesota Multiphasic
personality inventory. What is it? So MMPI have actually now probably fourth version or fifth version recently, which was launched. And every time they modify the MMPI, they actually try to make it more structured, more comprehensive, and less time consuming. Previously, the MMPI, original MMPI was actually 2 to 3 hours of a test, maybe more than that. Now the MMPI, the recent version MMPI is small, short, brief, scientific based, and it has a good, again, assessment module. So one, MMPI have validity scales and it has multiple other scales. If person says cannot say total number of unanswered items, we have to write them down. Lie scale, there are questions within MMPI. When the person is faking, it is squat. So there is a lie scale. Infrequency scale, a measure of self-presentation that is very unfavorable, malingering, or severe psychopathology. So infrequency scale is this type of the scale in MMPI which gives you a, again, heads up that this person is either faking or malingering or is having severe problems which probably won't be addressed in, again, conveniently. Then there is a defensive scale, unwillingness to disclose personal information and problems. High K scale scores increase some other scores. So there are, in every MMPI, there are these 5 basic things. If the person is not responding to the questions, you have to again calculate the number of them. They have lie scale, infrequency scale, defensive scale. Now there are other clinical scales within the MMPI, and there are actually 10 of them. Scale number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0 is 10 or okay. Social introversion, hypomania, schizophrenia, psychasthenia, paranoia, masculinity and femininity, psychopathic deviations, hysteria, depression, hypochondriasis. And according to these scales, there is interpretation of the, again, various scales. If he is high on hypochondriasis and low on other scales, then it is definitely, again, related, this clinical diagnosis is related to hypochondriasis. So when the question comes in, write notes on MMPI. So MMPI is basically Minnesota Multiphasic Personality Inventory. It has few scales like cannot say, lie scale, infrequency scale, and defensive scale. These scales means एक line सबके आगे, and then it has further scales which are 1 to 0. It includes ना भी सारे ज़बानी याद हों, मुझे भी याद नहीं है, तो even then you just have to write 0 to 9. There are 10 scales which measures hypochondriasis, paranoia, mania, schizophrenia, hysteria, social introversion, and again masculinity and femininity scales. So अगर आप briefly ये भी mention कर देंगे, your question is attempted. Okay, they don't want you to remember all of these scales and their interpretations, but at least you'll be able to number them. 0 to 9, various scales. Some of the common scales are these ones. Question attempted. Okay. Question? No? Sure? पूछ ले, अगर सवाल कोई पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है, रुकना नहीं, don't hesitate. Okay, there are a few things on the chat. ये MMPI के अलावा और कौन से स्केल्स हैं जो हमें रिटर्न के लिए माइंड में रखने चाहिए? मैं कोशिश करूंगा सारे करवा दूं, जो हैं वो मैंने इसमें शामिल किए प्रेजेंटेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए एग्जाम के हिसाब से वो मैंने अटेम्प्ट करके आपको दिए. सो उसमें जो स्केल्स जरूरी हैं मैं कवर करवाऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड इफ यू मिस एनीथिंग, always go back to the YouTube, listen to it, rewind the question, listen to it, it will be memorized. Don't worry.
There was another question on trisomy 21. The question was, a mother brought a child to the emergency department. He was having certain features which were related to some abnormality that you perceived as probably genetic based. What is trisomy 21? What are the important features of trisomy 21? How do you want to educate the mother about trisomy 21? And there was another component, how will you investigate trisomy 21? So trisomy 21 means the 3 chromosomes, they have abnormal chromosomal, again, distribution. Trisomy of chromosome 21. So ऊपर अगर आप देखें तो वो 3 क्रोमोसोम्स हैं 21 के, और उन तीनों के लॉन्ग आर्म्स जो हैं वो डिसरप्टेड है. एक सेकेंड presentation is 21-22 translocation, and 21-22 translocation means कि 21 chromosomes का जो upper end है, lower end है, वो 22 chromosome के साथ attach हो गए. ऊपर वाले ट्राइसोमी 21 मीन्स 3 क्रोमोसोम्स, तीनों क्रोमोसोम 21 के हाफ्स जो हैं वो डिसलोकेटेड है. दूसरी ऑप्शन ये है कि वो जो हाफ्स डिसलोकेटेड है वो 21 के साथ 22 के साथ अटैच हो गए. और तीसरी सिचुएशन ये है कि 21 का जो डिसलोकेटेड हाफ है वो 12 के साथ रीलोकेट हो गया, ट्रांसलोकेशन. सो ट्राइसोमी 21 is the genetic based disorder in which 3 chromosomes have distorted or actually translocation of the chromosomal material to either missing component or being attached to some other chromosome like chromosome 22 or chromosome 12. Definition trisomy 21 की दोबारा बता दूं. 3 क्रोमोसोम, तीनों के कुछ पार्ट्स मिसिंग या उनका कुछ कंपोनेंट्स 3 क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम से निकल के किसी और के साथ अटैच हो गया, लाइक 21 22 के साथ अटैच हो गया या 21 12 के साथ अटैच हो गया, उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं. अब इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं? टिपिकल फेसेस विद एपिकेंथल फोल्ड्स, ये आंखों के इधर जो लाइन है ये बड़ी डीप और विजिबल है, एपिकेंथस फोल्ड. एंड स्लांटेड पैल्पेब्रल फिशर्स, ये ऐसे करके, ठीक है, वो आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं और ये काफी डीप है. देन सेकंड, ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन द आइरिस, ये जो आपकी आंखों की पुतली है इसके अंदर ऐसे करके लाइनें जो नजर आ रही हैं, आमतौर पे भी होती हैं. अगर गौर से देखो, पता नहीं आप लोगों ने पीपल्स देखे कि नहीं देखे, लोगों की आंखों में आंखें डाल के मत देखना, नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप प्यूपल्स को देखें तो उसमें ऑलरेडी ऐसे करके लाइंस होती हैं. लेकिन वो लाइंस अगर इंटरप्टेड हों और फिर थोड़ी सी वेवी हों तो वो ब्रश फील्ड स्पॉट्स कहलाते हैं इन द आइरिस. शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स विद सिमियन क्रीज एंड क्लिंडोडिक्टेली ऑफ 5th digit. ये जो बड़ी टो है और जो 4th वाली टो है उसके दरमियान गैप ज़्यादा है, और ये जो हाथ हैं इनकी ये वाली जो फिंगर है दरमियान वाली, ये छोटी फिंगर जो ये छोटी है, क्लिंडोडिक्टेली. ये जो दरमियान वाली क्रीज है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ देम ये छोटी है. आई डोंट नो आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, ये छोटी है. और सिंगल पामर क्रीज, आमतौर पे हमारे पाम में अगर हम फोल्ड करें तो एक मेजर क्रीज है और उसके अलावा भी छोटी छोटी और क्रीजेस भी होती हैं. इन पेशेंट्स में वो क्रीज एक ही है, बाकी कोई और क्रीज नहीं नजर आएगी. वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज एंड हाइपोप्लास्टिक ईयर्स, कान जो हैं वो थोड़े से ढीले और नरम है, सो वो हिलते ज़्यादा है, मेरी तरह ज़रा हार्ड और फर्म नहीं होगा. सो दीज आर द फीचर्स, और इसमें से अगर आपको 3 फीचर्स भी याद हुए तो काफ़ी है.
तो आप 3 फीचर्स याद कर लें कि एक, बड़ी टो और छोटी टो के दरमियान गैप ज़्यादा होगा, क्रीजेज एब्सेंट होगी, हाथ में जो क्लाइनोडेक्टली है, ये जो स्पेसेस हैं ये थोड़ी नैरो हैं, ब्रश फील्ड आयरिस है और हाइपोप्लास्टिक ईयर्स हैं, और टंग जो है फिशर्ड टंग है, लास्ट साइड पे थी मुझे नजर नहीं आई। ओके, फिशर्ड टंग है। क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ट्राइसोमी 21। ओके, एंड हाउ विल वी एजुकेट द मदर, ये भी बताएं। ओके, वो भी बताऊं। अच्छा, वो सवाल मैं देख रहा था कि किधर गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओके, एक सेकंड मैं इसको आगे कर लूं किसी तरीके से। ओके, आगे हो गया। वापस आओ, सॉरी। ओके, एजुकेट कैसे करना है मदर को। कैन यू सी मी? नो सर, अभी स्क्रीन नजर आ रही है। आ रही है? ओके, ठीक है, हाँ, आ रही है। ठीक है। एजुकेट कैसे करना है मदर को? पहली बात, अगेन ट्राइसोमी 21 पे अगर नोट आएगा तो डेफिनेशन आपने दी ट्राइसोमी 21 की, क्लिनिकल फीचर्स दिए ट्राइसोमी 21 की। उसके बाद एक स्टेप था कि हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। जब प्रोसीड फर्दर की बात आ जाती है तो मीन्स आपके पास ओपन एरिया है बैटिंग करने का। सो आप कहेंगे जी मैं असेसमेंट करूँगा, मैं टेस्ट करवाऊँगा, मैं इन्वेस्टिगेशंस करूँगा, मैं माइक्रो रे फॉर जेनेटिक्स करूँगा जिस पे मुझे ट्राइसोमी 21 कंफर्म होगी और उसके बेसिस पे मैं आगे फर्दर चलूँगा। अगर तो आपने फर्स्ट प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है कि पेशेंट केस सिनेरियो इस तरह का है कि ये पेशेंट आपके पास आया है, 4-5 साल का बच्चा है, माँ कहती है इसको कोई मसला है, आपने बच्चे को देखा, एग्जामिन किया, आपको ये 5 फीचर्स उसके अंदर मिले और आपने सस्पेक्ट किया कि ये ट्राइसोमी 21 है, तो फिर वहाँ पे शुरू हो जाएगा एजुकेट द मदर। सो देन यू विल से दैट अगेन some of the individuals which are born, unfortunately there is some abnormality in their chromosomes. उर्दू में बात करूं, अंग्रेजी में सवाल अटेम्प्ट करना है, ऐसे अंग्रेजी में रखें। So there are some abnormalities in the chromosomes. Sometimes these chromosomes are not actually the way they should be, so there is some problem with them. Each human individual is made up of some structural component. One of these structural component is the chromosomes. In every cell there are chromosomes, and these chromosomes have some abnormalities. How do we confirm it? We will try to investigate, we will take further opinion, we will go for further tests, we'll do some again mental test and physical test and confirm the processes, and then we will update you. So आपको परेशान नहीं होना, लेकिन जो बच्चे को मसला है उसको फर्दर देखने के लिए we have to proceed further, and to proceed further we will go stepwise. This may take a month, few months, or maybe more than that to complete the whole of the process. But as soon as my doubts of having him, the child, trisomy 21 are seen and assessed, I will definitely sit with you again and talk to you further how to proceed ahead in the management of the situation. For the time being, the prime target is to assess him. Investigations, psychometric tools, other physical investigations, pediatrician's opinion, in blood and other investigations. This is how you will proceed in the exam. Clear? Yes sir, thank you so much. Partially. कुछ सवालों के जवाब अगर मिस भी हो गए, डोंट वरी, दे विल बी कवर्ड इन अगेन। ये जो एजुकेशन वाला कंपोनेंट है ये भी इम्तिहान का सवाल है, उसमें भी कवर करवाऊंगा, सो दे विल बी कवर्ड. Okay, there was one question that you are sitting in outpatient department and you have to issue a medical certificate to a person. What important components you will take into consideration while writing a medical certificate? This was the, again, question.
और उसमें शायद मेरा ख्याल है कोई केस सिनेरियो भी बना के उन्होंने भेजा था कि आप आउटडोर में बैठे हुए हैं और आपके पास एक मरीज आता है और आपसे उस सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपने सर्टिफिकेट लिखना है, तो उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सर्टिफिकेट के क्या होंगे. So the important components in a piece of a paper when you are writing a medical components is, the bottom line, includes sufficient detail in each medical record entry so that another healthcare provider with no previous interaction with the patient could obtain the necessary information about the clinical encounter to continue providing care for the patient if needed. So आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है वो इतना कॉम्प्रीहेंसिव हो कि वो आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट जब मुझ तक पहुंचे तो मुझे एब्सोल्युटली पिक्चर क्लियर हो कि इसमें ये बात कही गई है और इसका मतलब ये कि पेशेंट को ये चीजें होंगी. अगर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि दिस इज टू कंफर्म दैट द अबव नेम्ड वाज असेस्ड बाय मी. We did some mental state history taking, mental state examination, and certain relevant investigations. In the nutshell, I concluded that this person is suffering from schizophrenia and this person is incapable of doing service and may be boarded out from on medical grounds. अब मैंने जो बातें मेंशन की हैं उससे आपको एक बात तो ये असेस होगी कि जी इसको पूरी तरह से देखा गया, इसको एडमिट किया गया या अदरवाइज देखा गया, इसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस किए गए, प्रॉब्ली इसको दवाइयाँ भी दी गई और इसी बेसिस पे उन्होंने डायग्नोसिस का स्किज़ोफ्रेनिया बनाया. और क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाया है और पीछे से बात उन्होंने की कि उन्होंने असेस प्रॉपर किया है और ये नौकरी करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि दवाई दे के ट्रायल पूरा किया गया है जिसके बाद ये असेस किया गया है कि ये दवाई पेशेंट दवाई खाने के बावजूद जो काम जिस नौकरी पे ये लगा हुआ है वो ये नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोर्ड आउट कर दिया जाए. सो ये आपको अल्फाज में, शॉर्ट अल्फाज में, प्रिसाइज अल्फाज में ये बात को कवर अप करना है और ये फिर मैं अज्यूम करूंगा. ऑब्वियसली जाली सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन थीम ये है कि वो सर्टिफिकेट जब भी किसी के पास जाएगा तो वो उसके मुख्तलिफ लाइंस को जब पढ़ेगा तो उससे वो कोरिलेट करके एक एजम्पशन डिराइव करेगा और वो एजम्पशन आपकी, मेरी या किसी भी FCPS पास साइकियाट्रिस्ट की तकरीबन सेम होगी. आइडिया ये, record the information objectively and factually, being mindful of how the patient or others might interpret your words and choices. आपको बहुत ज्यादा उस मेडिकल सर्टिफिकेट में कहानियां नहीं बतानी, क्योंकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ ऐसे लोगों के पास भी जाएगा जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं, मसलन बॉस के पास जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम में जाएगा, बाकी जगहों पे जाएगा, लीगली भी हो सकता है वो इस्तेमाल हो. सो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज वहां पे नहीं करनी जो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के जुमरे में आए, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाए, जिसके डुअल मतलब हों. आमतौर पे मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिख देते हैं लोग, दिस इज टू कंफर्म दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ही मे बी बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स. अब मैं अगर इस सर्टिफिकेट को पढ़ूंगा तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर स्किज़ोअफेक्टिव का डायग्नोसिस बना दिया गया है और इसको बोर्ड आउट कर दिया गया है तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि इसको दवाइयाँ भी दी गई, ट्रायल्स भी हुए, इसका प्रोग्नोसिस भी असेस किया गया, इसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी हुई, इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई. सो मेरी एजम्पशन खराब हो जाएगी अगर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड फैक्चुअली प्रेजेंट ना की गई, पहली बात. दूसरी बात ये मैं लिख देता हूँ कि दिस पर्सन इज हैविंग सेल्फ नेग्लेक्ट, साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अब ये इररेलेवेंट चीजें हैं जो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं अगर डायग्नोसिस दे रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया का तो ये अज्यूम किया जाना चाहिए कि मेरा डायग्नोसिस करेक्ट है. अगर मैं कहानियां लिखूंगा इररेलेवेंट, तो अगर वो सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट होगा तो उस पर वकील बहस करेगा
और उन अल्फाज को वो पकड़ के इतना खींचेगा कि वो खराब कर देगा। आई एम सॉरी, मैं डिट्रैक हो रहा हूँ, वापस एग्जाम क्वेश्चन पे। सो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड फैक्चुअली, whatever is necessary for other peoples to know, but not to again breach the confidentiality. And then, where practical, write medical record entries as soon as possible following each event contemporary. So जो हम फाइल वर्क करते हैं, ठीक है, जब हम मरीज को असेस कर रहे हैं, उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करना फाइल के अंदर, ताकि कल को अगर वो फाइल कहीं मंगवाई जाए किसी भी लेवल के ऊपर, पेशेंट की कंसेंट के साथ ऑफ कोर्स, तो उसमें वो जो एविडेंस है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस एंड बोर्डिंग हिम आउट ऑफ द सर्विस शुड बी देयर। आमतौर पे अगर हम पेशेंट को देख लेते हैं और अगले दिन नोट्स लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम या तो कुछ ना कुछ मिस करते हैं या हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जो आमतौर पे ठीक नहीं होता। so, जैसे ही मरीज को देखें, उसका फाइल वर्क करें, फाइल वर्क करने के बाद उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं, मेडिकल सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल हो, वो ऐसी हो जो दूसरे के को समझ आ जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और क्लियर हो, ताकि कोई मैसेज डबल फॉर्म में ना दे। राइट? ओके, एनी क्वेश्चन? नो? चलूं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन जो था, दैट वाज अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज व्हाट वाज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? Stratified sampling and what is point prevalence? Point prevalence और stratified sampling दो चीजें पूछी गई थी एक सवाल में। अजीब सा सवाल था, बिकॉज आप किसी तरफ पूरा तरफ नहीं झुक रहे। अगर सैम्पलिंग का सवाल किया गया है तो फिर सैम्पलिंग का हो, पॉइंट प्रेवलेंस का उसके साथ सैम्पलिंग के साथ कोई लिंक नहीं बनता। बट बार एग्जामिनर ने सवाल बनाया तो ठीक ही है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? किसी भी रिसर्च में stratified sampling refers to random sampling techniques that clubs items of the whole population into different groups called strata. So मेरे पास अगर 100 लोग हैं पॉपुलेशन से, इस इलाके की पॉपुलेशन 100 लोगों की है ये, तो मैं उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा जी सेक्टर ए से सेक्टर डी तक स्ट्रेटा 1 है, सेक्टर ई से सेक्टर एच तक स्ट्रेटा 2 है, और सेक्टर जी से सेक्टर जेड तक स्ट्रेटा 3 है। अब मैंने उस 100 की पॉपुलेशन को 3 स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूजुअली ये स्ट्रेटास जो हैं ये एक जैसे होने चाहिए, मतलब आपस में जो पॉपुलेशन उनके अंदर है वो एक जैसी होनी चाहिए। सो मैं ये कहूंगा कि जी स्ट्रेटा 1, all the people are masters in education. Strata 2, all the people have bachelors in education. And strata 3, all the people have matriculate in education. So ये 3 strata मैंने डिवाइस कर दी into groups called strata based on their similar characteristics, जो भी मैंने characteristics देखने हैं. Then samples from each stratum are taken, whether proportionately or disproportionately. So ये 3 स्ट्रेटा मैंने बना लिए कि जी एक मास्टर्स ग्रुप का है, एक बैचलर्स ग्रुप का है, एक मैट्रिकुलेट ग्रुप का है। फिर इन तीनों स्ट्रेटा से यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं हर तीसरा शख्स अपनी स्टडी में शामिल कर रहा हूँ। दूसरे स्ट्रेटा से मैं कहता हूँ मैं जी कि हर चौथा शख्स मैं अपनी स्टडी में शामिल कर रहा हूँ, और तीसरा मैं कहता हूँ कि हर 5वां शख्स मैं अपनी स्टडी के लिए शामिल कर रहा हूँ, और मैं सैंपल साइज इकट्ठा कर रहा हूँ। सो मेरे पास ये सैंपल स्ट्रेटा 1 से 2 लोगों का आया, स्ट्रेटा 2 से 2 लोगों का आया, स्ट्रेटा 3 से 2 लोगों का आया, और ये 6 का स्ट्रेटा बन गया। 2 डार्क ग्रीन है, 2 ग्रे हैं और 2 लाइट ग्रीन है, और ये स्ट्रेटस एक पॉपुलेशन से डिवाइड हुए। दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
Point prevalence in a population at any given point in time, any given point in time, दोपहर के 12 बजे 2021 दिसंबर 27, number of cases of COVID into number of persons, 1 लाख लोगों में से 27 लोगों को कोविड है. ये point prevalence है. So the point prevalence is in a population at one point in time, number of cases divided by number of persons. So there were 10 persons and there was 1 case. So point prevalence is 1. Right? This is just the ratio. Clear? थक जाना तो बता देना ताकि फिर मैं बंद कर दूं. What do you say? Anybody? नहीं सर, अभी मेरा हाल है, थोड़ा सा पढ़ा दें, बाकी सब बता दें. मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ, थक जाना तो बता देना. I don't know how many of you are there, but if you people still feel that you are tired, just let me stop. I will cover it on a daily basis as well if you people will be interested. And so we are here and we've been waiting long enough for this lecture. अच्छा, so ये questions के लिए मैंने इसीलिए questions के लिए किया था कि तुम लोगों का question attempt होते हैं. Okay. सर डेली बेसिस पे भी रख लीजिएगा इस वीक में. अच्छा, वो कर लेंगे ताकि इम्तिहान के नज़दीक तुम लोगों को प्रेशर ना पड़े. मैं एग्ज़ाम से 2 से 3 हफ्ते पहले यूजुअली पढ़ाना छोड़ देता हूँ, अभी भी, और छोड़ देता था. उसकी रीज़न ये होती है कि एग्ज़ाम के नज़दीक अगर मैं पढ़ाऊँ फिर आपके लिए कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्चुअल हो जाती हैं. एंड आई डोंट वांट यू टू बी हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स. आई वांट यू टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. सो इसलिए ओके, एक क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, IMM का क्वेश्चन. What is group psychotherapy and what are basically the components of group psychotherapy? Group psychotherapy is a branch of psychotherapy intended to help people who would like to improve their ability to cope with life's difficulties and problems in a group situation. In a group therapy, one or more therapists work with a small group of clients together. So अगर 10 लोग हैं तो एक लीडर भी हो सकता है, ग्रुप थेरेपिस्ट. 2 भी हो सकते हैं कि वो 2 इधर उधर बैठे हुए और 4 लोग इधर और 4 लोग इधर हो गए, लेकिन वो एक ग्रुप सेटिंग में. द आइडिया इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स. सो अल्कोहलिक में सबसे कॉमनली अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप होता है. अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप में भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो सेम प्रॉब्लम्स के साथ वहां आ रहे होते हैं और उनका टारगेट ये होता है कि अल्कोहल की रिलैप्स प्रिवेंशन की जाए. सो एक थीम उस ग्रुप की और उस पे वर्कअप करना है मिलके, और उनमें से 1 या 2 ग्रुप लीडर्स हैं जो कि आमतौर पे थेरेपिस्ट होता है या थेरेपिस्ट के तौर पे एक्ट करता है. गोल्स ऑफ द ग्रुप थेरेपी: सपोर्टिंग अदर ग्रुप मेंबर्स, 1, रिलैप्स प्रिवेंशन में खासतौर पे जिसमें मैंने बात की, fostering personal growth, social skill development, developing interpersonal awareness, increasing self-awareness, holding accountability, understanding internal motivations. These are the goals of the group therapy. So the question which came in the examination was the definition of a group therapy, then what actually group therapy aims to do, and what are the goals of the group therapy. So these are the goals: supporting, fostering social skill development, interpersonal relationship problems, addressing interpersonal relationship problems, self-awareness, creating awareness about your anxieties, depression, and how to overcome that, holding accountability. So I should be responsible for some of the job, some of the responsibilities, like as a father, as a pregnant woman, as an employee, as any other. What are my responsibilities, and I should be held accountable for that. And understanding internal motivations, what exactly I want to achieve in life, what exactly I want to do in life, and how I will proceed further about it. These are the goals of the group therapy. Got it? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कमिंग बैक टू द डिफेंस मैकेनिज्म्स. वो जो वहां पे चीजें रुकी थी मैंने इसलिए वो पूरी नहीं की थी कि वो फर्दर सवाल आते जाएंगे
फ्रॉइड से रिलेटेड, और उसमें ये चीजें कवर होती चली जाएंगी। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन था, व्हाट इज फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, एंड देन what is psychoanalytical theory, and what do you know about it? So this was the question. So I attempted in a way, the unconscious mind, the conscious, the small amount of mental activity we know about, वो जो ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में हमें पता है। एक सब कॉन्शियस है जो कॉन्शियस से नीचे है, थिंग्स वी कुड बी अवेयर इफ वी वांटेड टू और ट्राई टू। सो कुछ ऐसी चीजें जो मैं डेलिबरेटली सोच के, अंडरस्टैंड करके समझ सकता हूँ, वो सबकॉन्शियस का हिस्सा है। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके बारे में सोचूं, ना चाहूं तो जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड, थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ एंड कैन नॉट बिकम अवेयर ऑफ। जो मर्जी कर लूं, मुझे अपने अनकॉन्शियस माइंड का पता नहीं चलेगा। और ये मेजर चंक है आपकी फ्रॉइड थ्योरी के हिसाब से आपके मेंटल प्रोसेसिंग का। सो मेंटल प्रोसेसिंग जो है, वो जो कॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ थोड़ा सा है। बहुत सारी हमारी मेंटल प्रोसेसिंग ऐसी है जिसके बारे में हम सोचें तो हम बात करेंगे, और मेजॉरिटी हमारी मेंटल प्रोसेसिंग ऐसी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बैकग्राउंड में क्या है। द इड is the part of the unconscious mind and comprises of the two instincts, eros and thanatos, according to Freud. Eros and thanatos. Again, Freud compared the mind to an iceberg, the unconscious, the conscious and subconscious. जो thoughts और perceptions हैं, वो conscious mind का हिस्सा है। Memories और stored knowledge, सो अगर मैंने बल्ब चेंज करना है तो मैंने किसी को बल्ब चेंज करते हुए नहीं देखा, ना मुझे पता है कि बल्ब कैसे चेंज होता है। लेकिन जब मैं बल्ब खरीद के लाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बल्ब है, इसके पीछे चूड़ियाँ हैं, तो इसका मतलब ये कि इस बल्ब के अंदर भी चूड़ियाँ होंगी, इसको मैं खोलूंगा, ये खुल जाएगा, इसको मैं लगा दूंगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरीज स्टोर्ड नॉलेज में है कि ये जो चूड़ियाँ हैं बल्ब के ऊपर, ये डेफिनेटली स्क्रू करने के काम आएंगी, तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर भी होंगी, उसको खोलूंगा, इसको लगा दूंगा। ये बात की बात है कि मैं बल्ब की चूड़ियाँ उस वाले की खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी बड़ी चूड़ियाँ थी, इसकी छोटी चूड़ियाँ थी, ओ ये बल्ब तो इसमें नहीं लगेगा, सो आई हैव टू चेंज इट। समटाइम्स, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हो जाता है, बट ये आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा है। अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा जो है वो फियर्स हैं, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वायलेंट मोटिव्स हैं, इरेशनल विशेस हैं, इमोरल अर्जेस हैं, सेल्फिश नीड्स हैं, shameful experiences, traumatic experience. All of these things are unconscious. We are never aware that these things do exist in ourselves. But some people do have more of them, some people have less of them, but they are there. Now, psychoanalytical theory. Principles of psychoanalysis developed by Sigmund Freud, 1856 to 1939. Surprisingly, when I went to Vienna, I went to Freud's house and I saw his couch where he was administering psychotherapy to the patients. मेटल का बना वो काउच था, इतना अनकंफर्टेबल कि आपकी सोच है। मैं तो ये सोच रहा था कि इसके ऊपर मरीज लेटता कैसे होगा, इतना हार्ड और सख्त है। आई एम श्योर उसने कोई बीच पर गद्दे शद्दे डाले होंगे उसको नरम करने के लिए, आई डोंट नो, बट इट वाज स्ट्रेंज। The methods of reading employed by Freud and later theorists to interpret texts. It argues that literary texts like dreams express the secret unconscious desires and anxiety of the author. That a literary work is manifestation of author's own neurosis. We can better understand and interpret literature by applying the methods of psychoanalysis both to literary characters and their authors, often at the same time. This critical endeavor seeks evidence of unresolved emotion, psychological conflicts, guilt, ambivalence, and so forth within that may well be disunified literary work. अच्छा, मैं ये थोड़ा सा
सवाल शायद मिस कर गया. This was not related to psychoanalysis. What criticism you have about psychoanalytical theory? So this was the criticism. I attempted it wrong because मैंने ऊपर से correct नहीं किया, नीचे वो सारा ठीक था. बहरहाल ये इसको फिर दोबारा बाद में attempt करते हैं. ओह अच्छा, शेर बाद में सुनाता हूँ वरना फिर सवाल रह जाएंगे. फ्रॉइड का एक और कॉन्सेप्ट है फ्री एसोसिएशन, और इस पे पूरा सवाल था एक, व्हाट इज फ्री एसोसिएशन? Surprising. Free association, one component of Freud's psychoanalytical theory. What is free association? Free association is if the client is encouraged to express anything that comes to their mind, is free association. Therapist is to identify thought extending back into the client's childhood. Clients must not hold back. Aim is to lower ego defense mechanism to gain access to unconscious material. So, free association means that I am allowed to say whatever comes to my mind without inhibition and keep on talking about those things which probably, again, are just coming as a thought in my mind. And as a therapist, I will be assessing it. इसने ये कहा, इसका ये मतलब हो सकता है, इसने ये कहा, इसका ये मतलब हो सकता है, इसने ये कहा, इसका ये मतलब हो सकता है. So that is free association. And by the end of the session, free association, I'll be able to do certain things like expression, exploration, inscription, translation, reflexivity, and transformation. So free association, खुले दिल के साथ जो दिमाग में आया बोलते गए. And as a therapist, I will be translating it, reflecting on it, transforming it into some clinical categories. I will be assessing the expressions. I will explore further on the concepts and the things expressed to me. Inscription, I will try to have a detail of it and again translate it. So free association have 6 components: expression, exploration, inscription, translation, reflexivity, and transformation. And what is free association? Again, I have given you the definition. 10 number का सवाल. The next question was, कितनी स्लाइडें हो गई? Okay, I don't know कितनी स्लाइडें हो गई. कितनी हो गई? मैं कह रही थी बस कर दें, मतलब थोड़ा थक गए हैं. ओके, चलो ये यहाँ पे खत्म कर दूं या ये खत्म करके खत्म करूं? ये कर दें, ये खत्म कर लेते हैं. वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, आप क्या कह रहे हो? सर वो क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन जो आप बात कर रहे थे. नहीं समझ आई, फिर बताओ. किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मुझे मिस हो रहा है वर्ड. हाँ सर, वो कह रही है वो जो आप साइको एनालिटिक थ्योरी और क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि वो उसको दोबारा देख लेंगे. और शी इज टॉकिंग अबाउट. ओके, वो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. वो मैं दोबारा करवा दूंगा, प्रॉपर क्वेश्चन देख के और क्वेश्चन डाल के करवा दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके जी, लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. Intelligence. The question was, what is IQ? And how do you measure it? So what is an IQ? IQ is defined as the ratio of mental age of to chronological age. जो हम IQ की definition लिखते हैं. Mental age over chronological age into 100. It represents a person's performance relative to same age. Shift the focus to the rate of development, allows children of different ages to be compared. IQ is a score derived from one of the several different standardized tests designed to assess intelligence. The term IQ, from the German
intelligence quotient was designed by German psychologist William Stern in 1912 as a proposed method of scoring children's intelligence tests, such as those developed by Alfred Binet and Theodore Simon in the early 20th century. So ये IQ की डेफिनेशन जो है ये जर्मन साइंटिस्ट जो विलियम स्टर्न था उसने दी है, उससे पहले एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दी है। और इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट की जो भी किसी भी इंडिविजुअल की या बच्चे की कैपेबिलिटीज को असेस कर सकें एक स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर्स के ऊपर। मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। IQ scores have been shown to be associated with such factors as morbidity, mortality, parental social status, while the heritability of IQ has been investigated for nearly a century. Controversy remains regarding the significance of heritability estimates. कहते हैं कि जी IQ जो है ना आपका इनहेरिटेंट आपको मिलता है, जितना वो मिलता है उतना ही IQ रहता है और एनवायरनमेंट का और बाकी चीज़ों का फैक्टर नहीं होता। इसके से रिलेटेड 7 और क्वेश्चंस हैं IQ से रिलेटेड, सो बाकी चीज़ें मैं वहाँ कवर कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? सर